So, a very good morning, dear friends. You see, in any classroom, any laboratory, every teacher wants better results. This is pakka. Every teacher wants better performance of his or her students towards the attainment of classroom outcome, because every teacher goes to the class or laboratory with certain set of learning outcomes. That is, after the topic is over, they will be able to do this. Now, the question is how the teacher is going to attain those learning outcomes. Definitely, you would say that in order to attain the learning outcomes, the teacher wants that his student, you see, should possess knowledge and ability for doing the work. Knowledge means something that you see what a person will be able to do, and skill means something which requires hand and head coordination. Now, does that suffice? Can the ability or training of students alone bring good results? Certainly not. So, in order to attain the performance of the students, the teacher wants that his students should possess the willingness or eagerness to exert high level of efforts in addition to their abilities for doing the work. Now, again, a problem before the teacher: how to have his trained and able students who are encouraged and who are impelled towards classroom activities. And this is precisely what we mean by challenge of motivation. That is, what motivates students and how students can be motivated. You see, many teachers, they are trying to force students to learn and try to develop interest in the topic, but they hardly do anything to get or to retain their attention. Okay, so in this particular session we will learn, first of all, the concept of motivation, and then what we mean by what are the different you see types of motivation. One is extrinsic motivation, another is intrinsic motivation. Extrinsic motivation is that when the teacher administers some reinforcement, he says, Ramesh ji, you have said very rightly, wonderful, you have done a good job. Likewise, at home, if the father says, if you get all A's, you will get a bike. So it is not you see inherent. It is something which is administered by some external agent. Okay, the second one is the intrinsic motivation. That is when a learner learns of his own accord in order to, you see, increase his mental horizon. He feels happy or he feels satisfied on solving a mathematical problem. He feels very happy. That is intrinsic motivation. Okay, then we'll study three approaches to motivation, because motivation can be regarded as a function of overcoming student resistance to learning. Student resist. So three approaches as ways can be viewed as, you see, techniques for minimizing student resistance to learning. One is the behavioral approach, which emphasizes the reinforcement of desired behavior through external motivator. Second is cognitive approach, which makes use of intrinsic motivators. And third is growth approach, which distinguishes between the lower level need and the higher level need. And according to this approach, once the lower level needs are met to some extent, can the individual pursue for the development of higher level need, that is need for self actualization. And at the end, we will study the techniques of motivating students. Okay, so first of all, you see, the question comes, how do you motivate students who are unmotivated? Because all of us, you see, discuss one question: what can we do to motivate students to learn? This question is, you see, straightforward, but there is no, you see, typical one answer that the teacher can employ for motivating their students. So, how does this student not do anything? Why he is not motivated?
Why is this student lazy? What I am doing wrong? Is what I am teaching boring? How can I motivate students? So some of the questions, you see, in a teaching learning situation, all of us come across with a variety of teaching teacher student related behavior. Some students attend classes regularly, okay, some are very much punctual, some try to you see attend to what the teacher is telling in the classroom, they submit assignment on time, they raise their hands to answer the teacher's question, some find classroom lecture very much interesting and quite absorbing, some find classroom lecture very much boring and they are not able to, you see, uh, uh, concentrate on what the teacher is saying. So it means one of the most important factor that can answer these question is the extent of inspiring the student. You see, a teacher who is attempting to teach students before first inspiring them is simply hammering on cold iron. Okay. Now think about a highly motivated student. What are his or her, you see, signs? Yes, what are the signs? Now, what are the signs of a highly motivated student? He he is eager to learn, he is attentive, he is regular, or he asks questions, he also maintain eye contact with the teacher. Okay, any other thing? They are smiling, they are you see energetic. Now the question is how these signs would change if this student is first generation college student. Who is the first generation college student? उनके पेरेंट्स भी कभी कॉलेज नहीं गए, ठीक है, तो ही इज एंटरिंग द कॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो कैसा बिहेव करेगा? डरा हुआ सहमा सा होगा। फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं पहली दिन आप देखते हैं दे आर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज दे आर नॉट सोशल विद ईच अदर। सो उस समय आपका जो गाइडेंस है या आपका एज ए टीचर उनको मोटिवेट करना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड लेट मी टेल यू, इन वेरियस IITs senior level professors are teaching first year student। अदरवाइज कुछ इंस्टीट्यूशन में कहते हैं नहीं, आई विल टीच ओनली द लास्ट फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट बिकॉज आई एम ए सीनियर। Yes. So, the student who is trying to support the family financially and economically, he will not seem to be very eager in the classroom or coping with some mental disorder. Now, what are you seeing here? A girl is trying to make horse drink water, but the horse is adamant. He is not drinking water. You can lead a horse to water, but you cannot make him drink. But you can always make him drink water unless you give plenty of salt first. And this reasoning can be applied to classroom situation. You cannot force your students to learn, but you can always make them want to learn by salting your technique of teaching to create their interest. इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें अपनी टीचिंग में चटपटापन लाना है। मैं अगर आपको चिप्स का पैकेट दिखाऊं एकदम से मुंह में पानी आएगा ना। तो वी हैव टू प्रोवाइड वेरिड लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू द स्टूडेंट्स and you have to, you see, relate the content with examples from their daily life or to relate the examples from the word of work, because वो बच्चा कहेगा ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। you need to give you need to quote certain examples कि इस फलां इंडस्ट्री में इस टॉपिक को पढ़ने के बाद you will be able to do this. So as a teacher you have to be knowledgeable about various you see fields. So
You see, many research studies have been conducted on the motivation of students, and research, you see, indicates that students learn more, there are fewer classroom problems, teachers feel better about their teaching when students are quite motivated to learn. And properly, or you can say poorly motivated students, they are likely to be learning below their capacities. So as a teacher, you need to inspire your students. Now, uh, what we mean by motivation is actually concerned with why of behavior, the reason behind people putting in effort. Why of behavior? You see, mother, he tries to you see give a glass of milk to the to his son or daughter in the evening, but the child doesn't drink milk. मदर क्या कहती है, क्या बोलती है? पी लो, इसमें मैं चॉकलेट डाल दूंगी, पापा आएंगे शाम को, हम आपको चॉकलेट दिलाएंगे या आपको सॉफ्टी दिलाएंगे, है ना? तो बच्चे को भी बच्चा वो दूध पीता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दैट थिंग। अगले दिन फिर आप कोई बहाना लगाते हो, वो फिर पीता है। तो क्या होता है कि भाई शाम को पापा आते हैं, मार्केट जाते हैं, और मार्केट में जो है बच्चे का ध्यान उस तरफ है, चॉकलेट या सॉफ्टी की तरफ, है ना? तो मम्मा को वो उसका जो है कमीज को पकड़ता है, मम्मा वो चॉकलेट या वो सॉफ्टी, मम्मा डांटती है, दांत खराब हो जाएंगे, गला खराब हो जाएगा, कुछ नहीं खाना, ये है वो है। तो उसको भी, उसको पता है नेगोशिएट करना है, वो जमीन पे लेट जाएगा टू गेन द अटेंशन ऑफ पासर वाइज, है ना? तो फिर आपको दिलानी पड़ती है। सो अगर आप एक रीइंफोर्समेंट रोज देते रहेंगे ऐसे, विदाउट टेलिंग द लॉन्ग टर्म बेनिफिट, he or she will be dependent upon the reinforcement. So likewise, if you enter the classroom with one remark that today my topic is this, today I will teach you about this thing, today I am going to talk you about this thing, तो स्टूडेंट का रिएक्शन क्या होगा? सर, दिस इज योर हेडेक, प्लीज गो एंड ब्रेक योर हेड, because you have not described the importance of that topic, the need of that topic. Because when you enter the classroom, students want to know why they are sitting in the classroom. So why part? So never begin your lecture by saying my topic is this. आपका topic नहीं है. Today I will teach. You are not going to teach. Your role is to facilitate. You will say, पहले आप एक need create करेंगे. I have already taken one or two example in my last session. तो आपको एक नीड क्रिएट करनी है, देन यू विल अनाउंस दैट टुडे इन दिस सेशन वी विल लर्न, नेवर से आई विल टीच, क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में सबके पास मोबाइल है, टीचर को वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बच्चे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मोटिवेशन इज कंसर्न विद व्हाई ऑफ बिहेवियर, द रीजन बिहाइंड पीपल पुटिंग इन एफर्ट। ओके, this word has been taken from a Latin word movere, M-O-V-E-R-E. It means to move. It means taking all the students together to reach the goal effectively. Motivation refers to motives in action. What is motive? Something that makes a person act in a particular way, है ना? That is, and you see, motivated behavior is always a goal directed behavior. जो व्यक्ति motivated है, he would like to, you see, reach to his goal because he always sets his goal. So motivation is what makes people put real effort and energy into what they do, getting people to do willingly and well those things which have to be done. Motivation is actually a process which leads the individual to attempt to satisfy some need. Uh, the strength of motivation,
or the pattern of motive influences a person's words, action और behavior. अगर उसका मोटिव फुलफिल नहीं होता तो उसके बिहेवियर में आप डिफरेंट जो है वो देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, वो डिफरेंटली बिहेव करेगा. अगर मैं आपकी किसी रिक्वायरमेंट को नो कर दूं तो यू विल फील नॉट हैप्पी, होता है ना. तो ऐसे ही, सो let me share with you the process of motivation. Motivation actually begins with need or needs that exist in all of us. Okay, and if the need is not fulfilled, we establish goal and create or take some action to reach goal. So motivation begins with need that exists within us all. And if the need is very strong enough, say acute hunger, or the student is thirsty, he or she will not be able to concentrate on anything else unless that need for food or thirst is met to some extent. मैं आपको सुबह से शाम तक एक टास्क दे दिया और इंस्ट्रक्शन दे दी, यू विल नॉट गो आउट, प्लीज डू इट, और मैं आपके पास हंटर लेके खड़ा हो गया, ठीक है. 4 बजे मैंने देखा कि सबका काम खत्म हो गया है. नाउ लेट अस सेलिब्रेट. ओके, विल गो टू इलांटे मॉल एंड सी द मूवी भूत. तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सर सुबह से गला सूखा हुआ है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ खाना चाहिए, होता है ना. तो इट मीन्स कंसंट्रेशन जो है वो खत्म हो जाता है. So if need is not fulfilled, it causes tension. It could be physiological tension or psychological tension. And the person creates some action. जैसे आपने गाड़ी खरीदनी है, टेंशन है, तो आप एक प्लान बनाते हो कि मैं नेक्स्ट ईयर मार्च तक जो है, ये एक्शन का मतलब वो एक्शन नहीं है, ये आपने एक्शन प्लान बनाना है टू रीच गोल इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई योर नीड. ठीक है, नीड फुलफिल नहीं हुई तो आप एक गोल एस्टेब्लिश करते हो जिसके लिए आप एक एक्शन प्लान, हो सकता है 2 एक्शन प्लान बनाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक एक्शन प्लान से यू डोंट गेट रिलीफ, राइट. तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आएगी, लेकिन अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव रूट भी है, आपने उसके बारे में भी सोचा हुआ है, तो आप वहीं से दोबारा से शुरू कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज द मोटिवेशनल साइकिल, मोटिवेशन प्रोसेस. Now coming to the kinds of motivation, one is the extrinsic motivation, that is something which is administered by some external agent. In the classroom, teacher is the external agent. He reinforces, he praises the student's activity. He says, wonderful, you have said very rightly, or he gives 3 star or 4 star. घर में पेरेंट्स हैं, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर हैं, दे आर द एक्सटर्नल एजेंट. सो नीड टू कंप्लीट a task or perform an activity for the sake of a reward, privilege, or externally derived satisfaction. He or she is not learning on his or her own accord, but under the influence of some external motivator, right? So it is not inherent, either imposed on the task or the student by a teacher or external agent. तो क्लासरूम में आपको जो है मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने हैं. क्लासरूम में आपको, आप आपस में भी डिस्कस करें कि ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं बताओ कौन सा डेली लाइफ का एग्जांपल रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि आपने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीटाइज करना है. आप याद करो, जब आप छोटे होते थे आपको 1 2 3 4 पेंसिल पेन से लिखना नहीं जल्दी से सिखाया था. कैसे सिखाया था? काउंटिंग कैसे करनी थी? बीड से, आपके पास वो कुछ ऑब्जेक्ट्स थे, उनको काउंट करना है ना, क्योंकि हाँ, तो ये चीजें
कॉन्क्रीटाइज हैं, पेंसिल पेन बाद में आता है. सो कॉन्क्रीटाइज का मतलब है कि यू हैव टू इंटीग्रेट सम मीडिया वाइल टीचिंग इन द क्लासरूम. या तो पीपीटी लेके जाएं, या आप कोई मॉडल लेके जाएं, चार्ट, पिक्चर, डायग्राम लेके जाएं, या कोई वीडियो दिखाएं. बिकॉज ये चीज़ें जो हैं स्टूडेंट को लाइक करती हैं. और let me tell you that there are number of videos available on YouTube ranging from 1 minute to 1.5 hour duration. As a teacher, you need to identify the videos and note down their you see links. Pass on those links to the students. They can watch the video in the classroom if they have got the mobiles, or you can also play back if you have got the LCD projector or laptop in the classroom. Relate करिए. So this is when you are motivated by external factors that are given or controlled by others. For example, by praise. Praise is appreciation is the cheapest way of inspiring your students. Wonderful. पहली बात तो ये है, you try to you see remember the names of your students. आज roll call लिया by name. You will be able to remember the names of 5 students or 10 students, next day 10 another students. So call them by their names, because a person's name is to him or her the most important and most sweetest sound. मुझे याद है अपनी डॉटर का, जब वो बहुत छोटी थी, 4-5 साल की थी, मैंने एक दिन उसको बोला, मैं कहा सुनीति जी मुझे एक गिलास पानी पिलाएंगी. तो पहले मेरे पास आई, मेरे माथे पे हाथ रखा, कहती पापा ठीक हो. मैंने कहा क्या हुआ. कहती पापा आपने सुनीति भी कहा और जी भी कहा. मैं कहा कैसा लगा. कहती पापा बहुत अच्छा लगा, रोज बोला करो. जस्ट सी, लुक एट, कि भी बच्चा चाहता है कि मेरा नाम, हम टीटू काका ये वो नामों से बुलाते हैं बच्चों को. वाई उनको उनके नाम से बुलाएं और साथ में जी कहें. हस्बैंड वाइफ को कह रहा है, वाइफ हस्बैंड, कुलीग को भी अगर जी. देखो एवरीबॉडी विल बी इंस्पायरिंग और देयर विल बी अ वेरी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन योर कॉलेज. Student learning is usually based on extrinsic motivation, although there will be some intrinsic motivation involved if you enjoy aspects of what you do. Now, the intrinsic motivation, this is inherent, what has been internalized and is the drive to do things for their own sake or for self-reward. That is feeling of happiness that learning to spell some difficult word produces. Feeling of satisfaction that working on some mathematical problem produces. You feel very happy. You are doing not to show to others. You are doing for your own sake, for your own satisfaction. घर में भी आपने देखा होगा, एक बच्चा जो है वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड है, दूसरा इंटरनली मोटिवेटेड है. आप पूछते हो बच्चे से, बेटे आपने होमवर्क कर लिया. कहता पापा बस अभी करना लगा, बिकॉज ही वांट टू शो टू हिज फादर कि नाउ आई एम डूइंग. दूसरे से पापा मैंने आपके आने से पहले ही कर लिया. ठीक है. सो सब तरह के बच्चे हैं, आपको जो है वो उनको. So this is when you are motivated by internal factors to meet your own personal needs. Most hobbies, reading, writing, learning, or leisure activities like gym, walking, evening walk, morning walk. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे धूप है चाहे बारिश है, you are going for morning walk अपनी satisfaction के लिए. You are playing badminton every day, not to show to others, for your own sake. So बहुत सारी hobbies जो हैं, these are the outcome of intrinsic motive. You do it because you enjoy it. तो enjoy करना है हर activity को. So now coming to the approaches to motivation, as I told you that motivation can be regarded as a function of overcoming student resistance to learning. Student resist. So there are 3 ways. I'm not going to discuss the theories of motivation, because only the educational implications of those theories are needed for you. So first is behavioral approach, which is based upon extrinsic motivation. Behavioral approach reinforces
द डिजायर्ड बिहेवियर. आपने आंसर दिया. I said, wonderful, you have said very rightly. Now, next time I will ask question, you will raise definitely your hand in order to seek the praise. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रेज करना है. ये ना हो कि बच्चे ने आंसर दे दिया और आपने कुछ नहीं बोला, तो बच्चा सोचेगा कि यार टीचर कितना खड़ूस है कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, तो इसको इतनी कर्टसी नहीं कि मुझे शाबाश दे और नेक्स्ट टाइम हाथ नहीं खड़ा करेगा. So behavioral perspective, extrinsic motivation. So this can be considered as a state when a person or a student does not learn of his own accord but under the influence of external motivator. You see, people are motivated to obtain reinforcers and avoid punishment. No one wants punishment. Everyone wants appreciation. So अगर आप ये उनकी जो need है, if you can fulfill to some extent, definitely you can keep all your students in the palm of your hand, है ना. तो ये need उनकी fulfill करनी है. But use moderation. Do not overdo it. जो मैंने एग्जांपल दिया, आज आपने फिर चॉकलेट दे दिया, कल सॉफ्टी का बहाना दे दिया, he or she will be dependent. It means you need to explain the long term benefit, why we are drinking milk. So otherwise people will be dependent upon the reinforcement. So as a teacher, you need to introduce the external motivation first, and then you need to motivate students intrinsically, अगर उनको long term benefit आप बताएंगे. Now behavior modification. What is behavior modification called as? What is change in behavior called as? Huh? Attitude. No. Okay, attitude भी हो सकता है, knowledge भी हो सकती है, skill भी हो सकता है. Change in behavior. Huh? Learning. You said learning. What's your name? Swati. You have said very rightly. To learn is to modify behavior. Wonderful. You see, before this topic was announced, you had some knowledge about motivation. Now after this topic is over, you will be able to define motivation. You will be able to distinguish between two types of motivation. You will be able to describe the approaches to motivation. You will be able to describe the techniques of motivating students. It means a change in your behavior has taken place as a result of receiving meaningful learning experiences from the teacher. So that change in behavior is called as learning. Okay. And behavior modification has got three components. One is stimulus. What is stimulus? Trigger करता है. Any object, any person, any event that leads to a response. In this hall, there are many stimulus. Glass, chair, table, screen, myself, आप भी हैं, bottle, wall, ये सारे, you are forming some attitude in your mind. वो तब आप respond करते हैं जब आपको से पूछा जाता है. मैं question पूछा, that is a stimulus. So stimulus is anything that triggers, any object, any person, any lead, any event that leads to a response. Now what is response? It is a unit of behavior that follows the particular stimulus. And what is reinforcement? A consequence of the response. अगर आपने अच्छा आंसर दिया, मैंने कहा वंडरफुल, तो इसका मतलब that will reinforce you in future. हाँ. So let me conclude this one, that if a particular stimulus response pair
is accompanied by a desirable consequence, then the stimulus involved will prompt the same behavior in future. So behavior modification is based upon psychological law of effect. That law states that behavior which is accompanied by a desirable consequence is likely to be permanent than the behavior which is accompanied by dissatisfaction. So behavior which is accompanied by satisfaction on the part of individual is likely to be repeated or permanent than the behavior which is accompanied by failure. उसको नहीं हम repeat करते हैं. Okay. So there are 4 techniques which can be employed for modifying the behavior of individuals. First is positive reinforcer. So we'll begin with the positive first. Positive reinforcer, a consequence that encourages the repetition of a given behavior is said to be positively reinforced. A consequence that encourages the repetition of a given behavior, जहाँ से वो रिपीट करता है, सो इसमें क्या आएंगे? प्रेज है, आपने उसकी टास्क को जो है सब बच्चों को दिखाया क्लासरूम में, लुक एट दिस असाइनमेंट, हाउ वंडरफुली इट इज रिटन, ओके, प्रिपेयर्ड, पीपीटी कैसी बनाई है, तो यू आर एप्रिशिएटिंग. और कई टीचर जो हैं वो देखते हैं कि ये वीक स्टूडेंट है एंड ही हैज़ आंसर्ड दिस क्वेश्चन वेरी वेल, सो वो अपनी बुक शेयर कर देता है. हाँ, उसके पास कई सारी स्पेसिमेंस हैं, ही इज़ पुअर, तो वो बच्चे को, या कई जो स्टूडेंट टीचर जो हैं वो उनको नोटबुक दे देते हैं, वीकली क्विज किया, या 100 रुपये का प्राइज रख दिया, पेन दे देते हैं, वगैरह वगैरह. पर्पस क्या है? टू इंस्पायर देम. सो पॉजिटिव रीइंफोर्सर. सेकंड क्या है? अवॉइडेंस लर्निंग. इसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं. You see, avoidance learning takes place when a person learns to avoid, to escape from unpleasant consequences. You see, even a good student can produce some poor work. The idea is to point out the work, not to criticize the individual. You see, we learn to drive safely in order to avoid accident. So for this, the peers or the seniors provide informative feedback to the individual. So this involves giving an opportunity to the individual to improve upon his desirable behavior. ठीक है, मैंने बोला बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट की एंड वन पर्सन, मिस्टर रमेश, has been submitting very good assignment, but this time his assignment was slightly second grade. So I tell him that Mr. Ramesh, you have been submitting very good assignment in the past, but this time this assignment has number of spelling errors. So what he will do next time, before submitting the assignment, he will incorporate spell check to avoid future criticism. ठीक है, तो पॉजिटिव वे में आपको फीडबैक दिया, ये नहीं दिस वर्क इज टिपिकल ऑफ यू, शॉर्ट ऑन फैक्ट्स एंड बैडली प्रेजेंटेड. तो मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, यार क्या काम करके लेके आओ, जैसी शक्ल वैसा काम करके लेके आओ, वेरी पुअर. तो इसका मतलब मैं आई एम अटैकिंग द इंडिविजुअल. तो दिस काइंड ऑफ रिमार्क विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द इंडिविजुअल. तो ऑलवेज गिव पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव वे में. So these two techniques can be used to increase the frequency of desirable behavior. ठीक है, पहला पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करना है. देन आपने फीडबैक दिया कि आपके काम में थोड़ा सा ये कमी रहेगी, गैप, आपने असाइनमेंट में गैप आइडेंटिफाई किया,
Now coming to the third one, extinction. Giving no positive reinforcement or withdrawing already given positive reinforcement as a result of his or her undesirable behavior. तो क्लासरूम में इसको कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं? बाय इग्नोरिंग द चाइल्ड. से एक बच्चा जो है ही इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ नॉइज बाय ओपनिंग पेन, बाय क्लोजिंग पेन. तो अगर मैं उसको अटेंड करता हूँ तो वो फिर दोबारा करेगा. व्हाट आई डू, मैं उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता हूँ, उसको इग्नोर करता हूँ कुछ देर के लिए. तो इग्नोर करना भी एक सजा होती है. आप अपने फ्रेंड सर्कल में कई बार नोटिस किया होगा कि यार मैं वहाँ खड़ा था तो आपने मुझे इग्नोर मारा, आई फेल्ट वेरी बैड, है ना. तो मैंने कुछ देर के लिए उसको इग्नोर किया. अगर वो फिर नहीं मानता, देन द फोर्थ टेक्निक इज पनिशमेंट. तो पनिशमेंट मस्ट बी गिवन इन प्राइवेट, एप्रिसिएशन मस्ट बी गिवन इन पब्लिक. ओके, आप उनको बोलेंगे रमेश जी आप ना मुझे क्लास के बाद मेरे रूम में आना, विल डिस्कस समथिंग. तो मैं उनको अपने रूम में बुला के पूछूंगा, हाँ भी आपको बेटा मैं पढ़ा रहा था तो आपका ध्यान नहीं था इधर, क्या रीज़न है? हाँ, वो बोल सकता है कि सर आपके टीचिंग में एग्जाम्पल नहीं था इसीलिए मुझे बोरिंग लग रहा था. तो इसका मतलब हमें उनको चेंज करना है, अपनी टीचिंग को चेंज करना है. पनिशमेंट मतलब ये नहीं कि उसको थप्पड़ मारा, हाँ, या उसको क्लास से बाहर निकाल दिया. उसको बाद रूम में बुला के उसको काउंसल करना है. So these two techniques, extinction and punishment, can be used to decrease the frequency of undesirable behavior. पहली दो टेक्निक्स हैं to increase the frequency of desirable behavior. जो later two techniques हैं, these can be used to decrease the frequency of undesirable behavior. Third approach is second approach is cognitive approach, which makes use of intrinsic motivators. Examples मैंने आपको already दिए हैं. That feeling of happiness, that working on some project producers, okay, feeling of pride that solving a very difficult mathematical problem causes. Okay, so this can be conceived as a state when a person learns something for his own satisfaction, for broadening his own mental horizon. And those who are intrinsically motivated are likely to prefer challenging work. Simple work से उनको satisfaction नहीं मिलती. They have incentive to work for their own satisfaction and they try to be independent. They are not dependent. So they attempt to solve problem on their own. They are not dependent upon others. They are taking initiative अपने आप, पहले से ही वो इनिशिएटिव लेके रखते हैं. They are proactive. Third approach is provided by humanist by Abraham Maslow. Any one of you who has heard the name of Abraham Maslow? You have read, you have studied. So according to this approach, when a person is actually motivated, he or she is in a state of tension and he or she is ready to undertake a particular course of action which is consistent with his or her feelings. And this Abraham Maslow has arranged human needs in the form of a hierarchy. Okay, so hierarchy at like triangle. Okay, and at the base of this hierarchy he has kept the physiological needs. What are the physiological needs? Need for food, need for water, need for sleep, need for entertainment, need for fresh air, basic needs, जिसको बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान. जब तक ये चीजें नहीं हैं तब तक कुछ भी और चीज बच्चे को मोटिवेट नहीं करेगी. राइट? सो फिजियोलॉजिकल नीड, इसका मतलब कि हमें अपने टाइम टेबल में भी कुछ चेंज लाना है. या आफ्टर एवरी 2 lectures
there should be a break of 10 minutes so that student can go for water और fresh होने के लिए जा सकते हैं वगैरह वगैरह. चाहे कोई किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, दौड़ा दौड़ा सीधा क्लासरूम में आ गया, अदरवाइज दे विल कीप ईटिंग their breakfast in the classroom. So physiological need. Once this need is met to some extent, the higher need in the hierarchy gets activated, and that is safety need. Need for security, need for protection against deprivation of lower level need, right? कि जो लोअर लेवल नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड, वो मेंटेन रहे, उसको वो स्टेबिलिटी रहे उसकी. से आपने लेबोरेटरी में बहुत सारे मैनुअल्स टांगे हुए हैं, सेफ्टी मेजर लिखे हुए हैं, बट एज ए टीचर यू आर नॉट ऑब्जर्विंग द सेफ्टी प्रोसीजर्स. बच्चों को तो आप बोलते हो कि भी आपने लैब कोट पहन के आना है, लेकिन खुद नहीं पहना हुआ. तो मुझे जो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करना है वो मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना है, ठीक है. सो दैट इज द सेफ्टी नीड. देन next in the hierarchy is the need for social. अगर मैं आपको बोलूं this is the task, all of you will do alone, you will not talk to each other, you will not try to like that kind of work because you want to be in the company of your friends, right? तो social need arise होती है. आपने भी देखा होगा जिनकी social need बड़ी स्ट्रांग होती है वो झटपट फ्रेंड बना लेते हैं. जैसे आप ट्रेन से आ रहे थे, इधर आपके साथ को पैसेंजर बैठा हुआ है, स्टार्ट करते हो आप कन्वर्सेशन, कुछ आपके जिंदगी में कुछ फ्रेंड्स अभी तक बने होंगे, है ना, ऐसा होता है ना. और जिनकी स्ट्रांग नीड नहीं है वो अलूफ रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते. सो सोशल नीड, तो इसका मतलब ग्रुप वर्क आप प्रमोट करेंगे क्लासरूम में. देन कम्स नीड फॉर सेल्फ एस्टीम. यू वांट रिकग्निशन. मैंने बोला स्वाति जी आपका उत्तर बहुत बढ़िया था, तो स्वाति जी फील्स वेरी हैप्पी कि सबके सामने टीचर ने मेरा नाम लेके बोला. और साथ में नॉर्थ इंडिया में तो हम जी भी लगा देते हैं, तो वो सोने पे सुहागा होता है ना. इस स्वाति जी फील्स वेरी हैप्पी, खुश हो रही है ना. सो ये सेल्फ एस्टीम नीड जो है वो फुलफिल करनी है. So it is accompanied by feelings of self-confidence, worthy, strength and usefulness. और अगर ये नीड नहीं फुलफिल होती, then it produces feelings of inferiority, weaknesses, helplessness. Okay? तो ये देखिए, on very few people operate at this level. Triangle है ना, बेस में फिजियोलॉजी, मोस्ट ऑफ पीपल ऑपरेट एट द फिजियोलॉजिकल नीड लेवल. उनको अगले दिन की चिंता नहीं है, आज का बस हो जाए काम, बहुत बढ़िया है. उससे ऊपर कम लोग ऑपरेटिव हैं, उससे ऊपर कम लोग ऑपरेटिव हैं, ट्रायंगल छोटी होती जा रही है, ठीक है. देन सेल्फ एस्टीम नीड. क्लासरूम में जो है आपने देखा होगा जिनकी सेल्फ एस्टीम नीड स्ट्रांग है, जैसे ही टीचर क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट्स हाथ खड़े करते हैं कि मैं आंसर दूंगा सबके सामने, मेरे को टीचर शाबाशी देगा, राइट. लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे हर बार स्वाति जी से सवाल नहीं पूछना. मुझे जो है आपका नाम क्या है, सोहन, शुभम से भी सवाल पूछना है, क्योंकि इसने हाथ नहीं खड़ा किया. तो हो सकता है ये शाई हो, आंसर आता हो. कई बार बच्चे को जो है थोड़ी सी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसको बोलिए आप अपनी लैंग्वेज में जैसा आप बोलना चाहते हैं वैसा बोलिए. हो सकता है उसका प्रॉपर शेप में आंसर ना हो, तो यू कैन से शुभम जी आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, की के बाद आप प्रॉपर शेप में वो सेंटेंस बोल दीजिए, ठीक है, ताकि उनको लगे कि टीचर ने मेरे पर. नेक्स्ट टाइम ये भी जो है हाथ खड़ा करेंगे, तो हमने सबका मोरल जो है वो बूस्ट करना है. ये नहीं कि सिर्फ 2-3 बच्चे जो है हाथ खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं से पूछेंगे एंड वी फील वेरी हैप्पी कि मेरा जो पढ़ाया था सबको समझ आ गया. ऐसा नहीं है. हाँ हाँ, yes. Then comes self-actualization need. The need to become what one believes one is capable of becoming. That is the tendency of the individual to become in actuality
what he or she is potentially. और जिनकी ये नीड स्ट्रांग थी वो या तो म्यूजिशियन बन गए, स्पोर्ट्स पर्सन बन गए, पोएट बन गए। अगर मैं आपसे पूछूं, सच सच बताना, आप 25 लोग बैठे हो, कितनों ने सोचा था कि हम टीचर बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब मेरा हाथ भी नीचे ही है कि भी मैंने सोचा यार 20-25 साल पढ़ने में बता दिए, आप 25 साल पढ़ाने में बता देंगे, ये कोई ज़िंदगी हुई? नहीं, हम तो इंडस्ट्री में जाएंगे। तो इंडस्ट्री में भी जो आके देख लिया, तो वहाँ से फिर टीचिंग में आए आप भी। तो इसका मतलब बहुत कम लोग की वो जो नीड है, जब आप 11th-12th में थे कि मैंने टीचर बनना है, उस समय सोचा होगा ना, राइट? सो ये नीड बहुत कम लोगों की फुलफिल हुई है। नाउ द क्वेश्चन इज, डू वी एवर फुली एक्चुअलाइज? आपने कहा नहीं। द आंसर लाइज इन द इंडिविजुअल. One person says that I am satisfied on obtaining a bachelor's degree from a local college. I'm happy. दूसरा कहता नहीं, मैंने बैचलर डिग्री तो कर ली, अब मुझे एमई करनी है, तो आई हैव टू डू एमई फ्रॉम ए वेरी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट. आई विल प्रिपेयर फॉर द गेट और एंट्रेंस टेस्ट. ओके. एक कहता है आई एम हैप्पी इन गेटिंग ए जॉब इन ए पॉलीटेक्निक. दूसरा कहता नहीं, I'll do my ME, I'll do my PhD, I'll write papers, I want to go to some engineering college, common engineering college. तो हर एक का जो लेवल ऑफ एक्चुअलाइजेशन है वो वेरी करता है. नाउ द डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स, आप भी एग्री करेंगे कि ये डीमोटिवेटिंग फैक्टर है. व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट मोटिवेटेड? व्हेन देयर इज अनफेयर और नेगेटिव क्रिटिसिज्म. जब हम उसको जो है वो सबके सामने जो है ह्यूमिलिएट करते हैं, नेगेटिव फीलिंग देते हैं, और व्हेन ए पर्सन इंडल्जेस इन सम काइंड ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता. ठीक है. अब शुभम जी 1 मिनट बाहर आइए, इधर आइए. आपने क्या करना है, जोर से बोलना है, जो मैं जैसे मैं बोलूंगा. ठीक है, मेरी तरफ देखिए. यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू. 10 बार बोलेंगे आप, ये देखो इतनी एनर्जी आएगी. यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट. करिए जोर से. हाँ, पूरे जोर से. यस आई कैन डू इट. ये ढीला था. मेरी तरफ देखो. यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट. आप 10 बार बोलेंगे ना, अगर फीलिंग आएगी मैं नहीं कर सकता, अपने आप फीलिंग आपके यहाँ, ये देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. यू फील वेरी एनर्जेटिक. बैठिए. So don't indulge yourself in negative self talk. Always say yes I can do it. देखिए, मैं आपको यहाँ ना एक गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का जॉब का कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा. आई थिंक आप भी एग्री करेंगे. गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, ए पर्सन सेज इफ ही कैन डू इट, let him do it. If he cannot do it, how can I do it? अब प्राइवेट जॉब में क्या है, if he can do it, I can also do it. नहीं तो आपको बाहर निकालेंगे. If he cannot do it, I must do it. तो गवर्नमेंट जॉब वाला कॉन्सेप्ट मत रखिए. तो आपने करना है कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट. करके देखिए आपके में कितनी एनर्जी आएगी. यू फील वेरी हैप्पी. और जैसे आप मुस्कुरा रहे हो ना, ऐसे हमेशा मुस्कुराना है. क्योंकि जो टीचर क्लासरूम में एंटर करता है विद ए स्माइलिंग फेस, तो स्टूडेंट्स भी खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, है ना. So always enter the classroom with an attitude that I am going to enjoy my students, not with an attitude, oh today again there is a class. इस एटीट्यूड से नहीं. Yes. सर एक एग्जांपल है. एक दिन से हम लोग की क्लासरूम्स बड़ी छोटी-छोटी होती है. तो क्या हुआ कि मैंने क्लास को मर्ज किया, सीएसआईटी दोनों लोग पढ़ाओ, दोनों लोग क्लास में बैठ जाओ, क्योंकि क्लास बहुत जल्दी मतलब 1 यूनिट कंप्लीट करना है. तो कुछ बच्चियां थी, क्या कर रही थी वो कि हम तो आए बड़े खुशी-खुशी की पढ़ाना है,
तो वो क्या कह रही है, सीट नहीं है। हमने कहा जब सीट लिया सामने की क्लासरूम से खाली है, तो सीट मिल गई तो गंदा है, तो गंदा है। तो इतने दिनों बाद मैंने कहा कि चलो तुम लोग एक यूनिट कंप्लीट करा दे, तो उल्टा चले जाने लगी, मतलब आधी मतलब 10 लड़कियां निकल के जाने लगी। हमने कहा क्या दिक्कत थी, तो कहनी मैम गंदा सीट है। हमने कहा इससे गंदा तुम लोगों का वो है, हॉस्टल रूम है, तुम्हारा खुद का रूम है। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, कंप्लीट करा रही हूँ, उसके चक्कर मुझे उतने दूर जाके इन लोगों को पकड़ के आना पड़ा कि चलो तुम लोग पढ़ लो। मैं यहाँ ये एग्जांपल देना चाहूँगा जो आपने बात कही है. There was one professor in this institute. Now he is no more. Professor B.M. Dheer. He was the head of the department. My HOD थे वो यहाँ पर. So we went to Delhi for conducting one induction training program. वहाँ गए थे हम. मीराबाई पॉलिटेक्निक है वहाँ पर दिल्ली में. तो हम वहाँ चंडीगढ़ से वहाँ पूरे 9 बजे पहुँच गए, टैक्सी लेके गए थे. तो 9 बजे वहाँ सिर्फ प्रिंसिपल आ रही थी, अपने रूम में बैठी नहीं थी, बाहर से आ रही थी. तो जैसे ही प्रिंसिपल आई तो हमने कहा कि मैम हमें ना वो रूम दिखाइए जहाँ पर ये कोर्स होना है. तो उसने कहा प्रिंसिपल साहब अभी तो आप आए हो, चाय पीते हैं तो फिर उसके बाद आपको दिखा देंगे. उनका मतलब था कि 10 बजे तक तो ये हो जाएगा. तो हम मेरे प्रोफेसर कहते नहीं भाई मुझे तो वो कमरा देखना है. वो अड़ गए, नहीं मैंने कमरा देखना है, कहाँ पर हमें OHP रखना है. उस समय OHP लेके जाते थे. तो उन्होंने किसी पीएन को हमारे साथ भेज दिया, खुद नहीं आई. और हमने देखा, प्रोफेसर के मन में आया जो मैं रीड कर पा रहा था कि सारी चेयर्स अनऑर्गेनाइज्ड थी और सामने शीशे थे और वहाँ से बहुत सनलाइट आ रही थी. और इधर जो है OHP लगाना था हमने, तो पूरी जो है वो स्क्रीन दिखनी नहीं थी क्योंकि उस समय OHP थे, अभी LCD प्रोजेक्टर है. ये तो लाइटेड रूम में भी चलते हैं. तो उन्होंने क्या किया, एक चेयर को ऐसे करके, जो ऐसे पड़ी थी ना, उसको ऐसे करके ठीक किया, जो मेरे HOD हैं. दूसरी को ऐसे करके ठीक किया. तो मैंने कहा यार मेरा HOD कर रहा है. मैंने भी एक चेयर करनी शुरू की. इतने में 2-4 लोग और आ गए, उन्होंने भी शुरू कर दी करनी हमें देखते देखते. आप बिलीव कीजिए 10 मिनट्स में वो सारी चेयर्स ऑर्गेनाइज हो गई. फिर मेरे प्रोफेसर ने कहा कि भाई आप ना कुछ अखबार की शीट लेके आओ. तो अखबार की शीट लेके आए और साथ में टेप लेके आए. तो किसी को बोला कि हाँ इसको ना शीशे के ऊपर ऐसे टांग दीजिए. तो इसका मतलब है कई बार हमें एज ए लीडर इनिशिएट करना पड़ता है ना. अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं अपने रुमाल से उस चेयर को साफ कर मैंने कहा मेरी चेयर ले लो, मेरी चेयर हाँ ले ले लो, लो. मुझे खड़े होकर पढ़ाना है, ये लो तो बैठो और करो। कहने का मतलब ये है कि भी हमें कई बार ना वो दिखाना पड़ता है इनिशिएशन. मुझे ऐसा लगा कि ये लोग जा रहे हैं, इनको अपने सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, हाँ जबकि मैं पढ़ा रही हूँ, कि मैं पढ़ाऊं, मुझे कंप्लीट कराना, अच्छे से पढ़ाना है. और मैं पकड़ के लाई, अपनी चेयर टेबल दी, मैंने कहा लो मुझे तो खड़े ही पढ़ाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं. सो पब्लिक ह्यूमिलिएशन, किसी दूसरे के सामने आपने डांट दिया. देन रिवार्डिंग द नॉन परफॉर्मर, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड का बच्चा है और उसको मैंने एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए. ऐसा मत कीजिए. जो रियली डिजर्विंग है उससे 1 नंबर जरूर कम दीजिए उसको, या 2 नंबर कम दीजिए. लेकिन जो डिजर्विंग है वो अपने आप आ रहा है तो उसकी कोई सिफारिश नहीं है. फेल्यूर और फियर ऑफ फेल्यूर, बच्चा कहता है सर मेरे से हो नहीं, आप उसका मोरल बूस्ट कीजिए. अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं मैं आपके पीछे हूं, आप डोंट वरी, प्लीज अटेम्प्ट कीजिए. सक्सेस विच लीड्स टू कॉम्प्लेंस, हर काम के बाद आपको सक्सेस मिलती है तो आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, आप नेक्स्ट टाइम प्लानिंग नहीं करते. तो चाहे एक्टिविटी आपने पिछली 10 बार रिपीट की है, ये जो लेक्चर है आप बिलीव कीजिए ये मैं कम से कम 500 या 1000 बार पढ़ा चुका हूँ. इवन देन मैं रात को अपनी पीपीटी को मॉडिफाई किया, उसको देखा कि ये ग्रुप है, इसमें ये नई चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ. प्लीज़ मेक ए प्लान हमेशा जो है वो इट अवॉइड्स हैफाजर्ड वे ऑफ टीचिंग. इट कीप्स द टीचर ऑन द ट्रैक कि पहले मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है. ऑलवेज मेक ए प्लान. लैक ऑफ डायरेक्शन, जैसे मैंने सवाल पूछा था व्हाट आर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, बच्चे को डायरेक्शन नहीं कितना लिखना है. या मान लीजिए HOD ने आपको एक लेटर दिया, उसके ऊपर लिखा स्वाति जी प्लीज डिस्कस, प्लीज स्पीक. कई बार प्लीज स्पीक भी लिख देते हैं ना. अब क्या स्पीक ना ये नहीं पता.
क्या डिस्कस करना है वो नहीं पता। तो स्वाति जी ने वो कागज जो है अपनी टेबल में रख लिया। तो 2 दिन बाद स्वाति जी मेरे पास आती हैं कि सर आपने कहा था डिस्कस करनी। पहले तो मैं डांटता हूँ कि आप अब आए हो, पहले क्यों नहीं आए। तो स्वाति जी कहती सर आपने कोई टाइम और डेट तो लिखी ही नहीं थी। वो भी शी इज ऑल्सो राइट। तो मैं कहता हूँ अच्छा अब आप आए हो तो आपने ये किया वो, सर आपने तो कुछ कहा ही नहीं था, आपने डिस्कस लिखा है। तो मैंने बिना मतलब के उनको फायर किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्वाति जी को भी उसी समय इंटरकॉम करना चाहिए था कि सर आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, इसमें मैं क्या करना है और कब मैं आपके पास आऊं। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा वेग रिमार्क उनके पास नहीं आएगा। तो गिव डायरेक्शन। लो सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ प्रायोरिटीज, पॉलिटिक्स है, अनफेयर ट्रीटमेंट है, पुअर स्टैंडर्ड, ये सारे जो हैं आपके हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू यू मोटिवेट योर स्टूडेंट्स। Are all students motivated in the same way? No. Motivating student is a challenge that almost all teachers face. Students need to be motivated. What is the teacher's role in student motivation? How motivation can be sustained? And is motivation of students really necessary? It is necessary.
So, how did you like this video? What is 212 degree? Boiling point of water in degree Fahrenheit. So it means he said that at 211 water was just hot, and at 212 degree it started boiling, and boiling water, you see, we got steam, and steam se locomotive chala. So it's a matter of just 1 degree of extra effort that makes the difference. And there were 5 attributes. One was 212-degree attitude. So it means just like 212 degree is the perfect temperature for boiling water, so our attitude must be perfect. Our attitude towards students, our attitude towards technology, our books, our syllabus, our subject must be positive. Okay, so attitude is nothing but your liking or your dislikings. Okay, if I say I like my job, that reflects my feelings about my job. जो भी जॉब मिली है उसमें हमने अच्छा ही करना है. Okay, then 212 degree kindness. You have to be very kind to each and every student irrespective of caste, color or creed. Then 212 degree belief. Yes, I can do it. Yes, I can do it. Say only 10 times, you will be getting energy. Then 212 degree focus, that is clear goal. And 212 degree perseverance means लगे रहो, निरंतर continued effort करते जाइए. देन जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने ये वीडियो नहीं देखी, मैं ये भी उनको दिखा देता हूँ. आवाज आ रही है? सुनीति, आवाज आ रही है? Yes, sir, it's audible, sir. शायद तुम्हारी जिंदगी की सबसे खास जिंदगी आज तुम चाहते हो ये सोचो जिंदगी खाली तो कैसे खेलना आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा बस इतना कहूंगा जाओ और ये सब तुमने जी बात करके चाहे कुछ सही हो या ना, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं. लोग मैं सोचा कि इस मैच में कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये सब इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हॉकी खेल है तो ये सब खुदा को तुमसे वापस नहीं मांग सकता. जाओ अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से, हर उस इंसान से जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया.
So, how did you like? So, uh, let me share with you some of the techniques of motivating students very quickly. Firstly, ensure that their basic needs are met. So, you see that there should be a congenial atmosphere in the classroom, proper seating arrangement, and there should be a break of 10 minutes in every after every lecture. Create an atmosphere that is open and positive. Don't create anxiety prone environment. So there should be anxiety free environment where every student feels free to talk to you and to talk to other members in the classroom. And when you enter, smile at them, because smile is an inexpensive way to improve your looks. And specify what your students are to learn. So set smart goal that is specific, measurable, attainable, relevant, and time bound. Okay. And whenever you are giving some group task, so always involve them in you see getting their goals fixed. So mutual goal involvement. And there are different types of students. Some students have strong need for power, some students have strong need for relationship, and some students have strong need for achievement. So you identify the needs of the students, and tasks can be assigned to those students accordingly. They will achieve much better. Provide varied learning experiences, video, PPT, small exercise in the classroom, examples from the daily life, examples from the word of work, and providing opportunities to them to experience success by assigning tasks which are not easy and not very difficult.
and always give due credit to their effort. So if a student has done a very wonderful work, take him to the principal and say, sir, this gentleman or this ma'am lady has done a wonderful job. कई बार क्या करते हैं, हम बच्चे से काम करवा के हम उसको प्रिंसिपल को बोलते हैं ये मैंने किया, या कई बार हम पेपर बच्चे से लिखवाते हैं और उसमें नंबर नाम अपना पहले डलवा लेते हैं. दिस इज रॉन्ग. So don't steal the credit of your students. Always acknowledge their credit. Providing opportunities to grow and mature. Provide immediate feedback to them. Be fair in giving feedback. Building strong and positive self-concepts among students. Yes, you can do it. Okay. And students need to have a sense of belonging in order to succeed. Be approachable because they may need your help, so be visible. So if you have told them that I would be available after 4 o'clock in my chamber, so you must be there in the chamber. And maintain good communication and interpersonal relation. Maintain student interest by use of actual material, charts, pictures, models, and so on. Focus student attention by using words which themselves give direction. So our purpose is not to impress upon our student with the use of very difficult language. Our purpose is to make the message clear. So always talk in the language of the students, चाहे आपको bilingual use करना पड़े, चाहे हिंदी बोलनी पड़े. एंड स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, ये मैंने आपको फर्स्ट डे बताई थी, जिसमें पर्पसफुल मूवमेंट्स, मीनिंगफुल जेस्चर्स, चेंज ऑफ वॉइस, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, oral visual switching, and then asking. Yes, तो ये मैंने आपको बताई थी. To gain the attention, stimulus variation, the skill is the purpose is to gain the attention of the student, and it should be throughout the lecture. And there are many tips to gain the attention of the student.